Jai student, welcome to the online class of science. This is chapter 8 motion of your science book. In the previous class we discussed about the acceleration. So acceleration is the rate of change of velocity per unit time. Is known as acceleration. Its SI unit is meter per second square. Today we will do some numericals related to the acceleration. So here is the first question related to this. A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. Okay, इसमें हमें acceleration find करना है. एक बस है जो कि स्टार्टिंग स्पीड उसकी 80 km पर आवर थी, मतलब 80 km पर आवर की स्पीड से वो चल रही थी, जो कि 5 सेकंड बाद उसकी जो स्पीड हो जाती है वो 60 km पर आवर हो जाती है. इस केस में हमको acceleration find करना है. So let's we solve. First we will write the given जो है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 80 km पर आवर. So we will write initial velocity is represented by u. स्मॉल u से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 80 km पर आवर. अच्छा, इससे प्रीवियसली हमने जैसे कि यूनिट एसआई यूनिट पढ़ी है, जो इनिशियल वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है. सो वी विल कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकंड. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. ओके, एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 seconds. ओके, सो 1 kilometer is equal to how many meters? This is 1000 meter and 1 hour is equal to 3600 seconds. So u is equal to कितना हो जाएगा 80. In place of kilometer we put 1000 meter upon in place of hour की place में 3600 seconds put करेंगे. Okay, so you will get 0 0 0 0 cancel out. 4 9 is 36. 4 20 is okay 200 upon 9. So u is equal to 22.22 meter per second. Okay, this is the value of u. Now we find the final velocity. So final velocity is equal to final velocity जो होती है उसको v से रिप्रेजेंट किया जाता है. v 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, 5 सेकंड बाद उसकी फाइनल स्पीड कितनी जाती है 60 किलोमीटर पर आवर. तो 60 किलोमीटर पर आवर इज द फाइनल वेलोसिटी. सो वी विल कन्वर्ट सेम एज लाइक हियर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000. सो वी विल मल्टीप्लाई 1000 upon 1 hour is equal to 3600. Okay, so cancel out these values. 2 0 से 2 0 है, 6 10 is 60 upon 6. Okay, so you will get 100 upon 6. Divide this, so you will get the value v is equal to 16.66 meter per second. Okay, 16.66 meter per second. Okay, here the time is given. Time is already given in SI unit, that is 5 seconds. Okay, it is already given, so we do not change the time because it is already given its SI unit. Now find out acceleration. Acceleration is to be find out. So we will put the formula. Acceleration का formula जो होता है change in velocity upon time interval. ठीक है, change in velocity v minus u upon t. This is the formula acceleration. We will put the values. In place of v we will put 16.66 minus in place of u 22.22 upon what in place of t we will put 5 seconds. So you will get, if we subtract from this, so you will get the value of 22.22 minus 16.66. Okay, 12 minus 6 6
11 minus 6 5, 11 minus 6 again 5, cancel out. So 5.56. 16 is less than 22, that's why we take the minus sign here. So what is the value of acceleration after dividing? The answer is minus 1.1. The SI unit of acceleration is meter per second square. Okay, so this is the answer of numerical. I repeat the numerical. Given initial velocity is equal to 80 किलोमीटर पर आवर. इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी. स्टार्टिंग में गाड़ी की जो स्पीड थी, बस की स्पीड 80 किलोमीटर आवर थी, तो हमने इसको यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट किया. इसको कन्वर्ट करा तो u की वैल्यू आ गई कितनी? 22.2. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स. फाइनल वेलोसिटी सेम एस कन्वर्ट करते हैं 60 किलोमीटर पर आवर को, तो ये हो जाती है 16.66. Time t is 5 seconds, so we put the values in acceleration formula, that is change in velocity upon time taken. After putting the values, you will get minus 5.56 upon 5, and after finally you will get the answer as minus 1.1 meter per second square. This shows that it has a negative acceleration, that is retardation. Okay, thank you very much.